Hello and welcome everyone. My name is Kushal Singh. Welcome to today's session. Uh, Before I start today's class, let me quickly make sure that we have gone live properly and that all of you can hear me and I'm audible on that. Okay. Hello and welcome everyone. My name is Kushal Singh. Welcome to today's session on an academy. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं about how you can improve your RC passages. कैसे RC passages को attempt करना है, कैसे उनमें improve करना है. All of that we are going to be discussing in today's session. I'm just going to wait out for a couple more people to join, and then we shall begin today's session, guys. तो थोड़े से और लोगों को ज्वाइन करने का इंतज़ार कर लेते हैं गाइस. तब तक जिन्होंने अभी ये सेशन ज्वाइन किया है चैट में बताएं. ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइन्ड इन द सेशन, डू लेट मी नो इन द चैट हु ऑल हैज जॉइन्ड एंड व्हाट आर योर डिफिकल्टीज व्हेन यू डू आरसी कॉम्प्रिहेंशन. आरसी कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त आपको क्या क्या डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, आपको किस एरिया में हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फॉर आरसी कॉम्प्रिहेंशन. ये आप लोग ज़रूर नीचे की चैट सेक्शन में मुझे बताएं. All those people who have joined my session, do let me know. And all those people who will be watching this video much later, recorded, you may also join not just my RC sessions on YouTube, बट आप इसी के डिटेल्ड सेशंस और कंप्लीट सेशंस अन अकेडमी पे भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पोल क्विजेस रखता हूँ, क्लासेस रखता हूँ, आरसीज को डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ. There's a host of things that I do on the Unacademy platform, which you all can check out, and you can start preparing for your law entrance examination using those sessions of mine. तो और सेशन चालू करने से पहले कुछ थोड़ी सी और दूसरी डिटेल्स हैं वो शेयर कर लेता हूँ. कुछ प्राइस हाइक आने वाला है 10% फ्रॉम February 3rd. तो अगर प्लान बन रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, जल्द से जल्द लीजिएगा बिफोर 3rd Feb comes, so that you can save not just the 10% hike वाला मनी, बट ऑल्सो करंट कॉस्ट पे अगर आप मेरा कोड कुशाल लाइव KUSHALLIVE कुशाल लाइव अगर ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन में. तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा. एंड अगर आपको DULLB एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, आपको अगर फिर से पास DULLB एग्ज़ाम लिखना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द DULLB मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स. बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ सेशन के बीच में शेयर करता रहूँगा. बट राइट नाउ लेट अस गो इनटू द टॉपिक. उत्सव का डाउट है कि व्हेन रीडिंग इन मॉक्स इन प्रेशर, unable to understand RC by reading one time and have to go back to passage again during question solving. तो सबसे पहले उत्सव का ये जो डाउट है कि सर पैसेज रीड करते टाइम एक तो बहुत प्रेशर होता है एग्जामिनेशन में, चीज़ें पहले से ही समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर से डिटेल में पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी देखना है, और इस वजह से क्वेश्चन याद नहीं रहता एंड बार बार पैसेज देखना पड़ता है. तो सबसे पहले उत्सव, that is the process of reading comprehension. In fact, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेज में गोइंग बैक टू द पैसेज ऑलवेज अ गुड थिंग. द रीजन बीइंग that improves your chances of accuracy. Now I am understanding what your problem is, that आपको एक आंसर ढूंढने के लिए पूरा पैसेज फिर से स्कैन करना पड़ता है, which is a wrong thing.
तो जब आप रीड करो, यू हैव टू रीड आराम से, यू हैव टू रीड तसल्ली से, यू हैव टू रीड एट अ पेस इन विच यू अंडरस्टैंड, ताकि जब आपको क्वेश्चन आए यू नो डायरेक्टली कि इसका आंसर समवेयर इन द स्टार्टिंग मुझे मिल जाएगा, मैंने पढ़ा था, मुझे याद है. Then you are going back not to discover the answer, you are going back there just to understand, just to spot out the answer कि भाई ये आंसर है, ऐसा ही यहाँ पे है, कंफर्म करके फिर आप अपना आंसर दे सकते हो. तो दैट इज द राइट प्रोसेस. तो आप जो कर रहे हैं वो प्रोसेस ऑलमोस्ट करेक्ट है उत्सव, बस उसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने की आपको जरूरत है. गॉट इट. अफीफा शेख, आई वुडेंट रिकमेंड एनी बुक एज सच. अगर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ आरसी पैसेजेस करने हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी पे, स्पेशल क्लास, यानी आपको पे नहीं करना. और हर आरसी क्लास में मैं ऑलमोस्ट नया पैसेज ही कराता हूँ, तो आप उसमें से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन गिव योर आंसर्स, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आंसर कर लो, एंड उसके बाद में सेशन देख के अपने आंसर्स करेक्ट या रेक्टिफाई भी आप कर सकते हो. तो ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक सेशन में रखता ही हूँ विच आई थिंक, एंड हर सेशन में ऑलमोस्ट दो पैसेजेस डिस्कस होते हैं. तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अगर आपको वेराइटी ऑफ आरसी पैसेजेस करने हैं. ठीक है फीफा, आई होप आई हैव सॉल्व योर इशू एज वेल. सर वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. वोकेबलरी एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी बड़ी, वोकेबलरी ओवर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो जो जब जब गलत होते हैं उन वर्ड्स को अच्छे से सीखो, कि इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, नॉट वन स्पेसिफिक व्हाट डू यू से अप्रोच दैट यू कैन टेक टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. अच्छा, इसके अलावा भी जिन्होंने नया नया भी ये सेशन ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई भी आरसी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप नीचे वाले चैट सेशन में मुझे बता सकते हैं. लेट मी नो. आई विल वेट अनदर मिनट मोर. अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप पूछ लें, नहीं तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद पैसेज रीडिंग. हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मूव करेंगे. बिल्कुल हो सकती है उत्सव, कोई दिक्कत की बात नहीं है. डेफिनेटली आपकी 3 मंथ्स में वोकेबलरी इजीली इंप्रूव हो सकती है. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मेरे सेशंस अटेंड करें. मैं मेरे सेशन में स्पेशली रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस लेता हूँ. तो आप डेफिनेटली वो अटेंड कर सकते हो उत्सव. वहाँ से आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें बहुत हेल्प मिली है, तो आप भी ट्राई आउट कर सकते हैं those sessions, and I believe that they will definitely help you in improving your understanding of vocabulary.
एंड वो आप धीरे धीरे वो प्रोसेस आप अपने आप डिस्कवर कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल कि पहले कौन सा स्टार्ट करना है कौन सा नहीं स्टार्ट करना, मतलब दैट आई एम श्योर यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू फिगर आउट। चलिए उत्सव, तो सेशन चालू करते हैं। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। जो बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एट दिस पॉइंट either pause and start reading the passage and then move ahead after a couple of minutes when I start discussing the question, या फिर आप इसी टाइमलाइन में वीडियो को ऑन रखें और उसी के साथ साथ ये पैसेज पढ़ना चालू करें। प्लीज स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। प्लीज स्टार्ट रीडिंग द पैसेज उत्सव। मैं 1-2 मिनट दूंगा, 2 से 3 मिनट आप लोग कोई पैसेज पढ़ने के लिए। पढ़ के हो जाए तो ज़रा मुझे बताइएगा। आफ्टर यू फिनिश रीडिंग प्लीज डू लेट मी नो। सो उत्सव आप एक काम करो, साइड में जाके अगर आप अपना क्लैरिटी इंक्रीज करोगे, तो अगर आप अपना क्लैरिटी इंक्रीज करके 720p पे लाओगे तो इजीली आपको विजिबल हो जाएगा पैसेज। So please do that and let me know if the passage is visible after that। तो वो करने के बाद आपको पैसेज विजिबल हो रहा है या नहीं, ये जरा बताइए। Is it visible? Yes or no? आई होप अब आपको पैसेज विजिबल हो रहा है। डू लेट मी नो सर इन द चैट डाउन बिलो।
to see which I was also able to see the passage I am hoping. चलिए इसी नोट पे मैं अब आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा what this passage is talking about. So this year alone, more than 8,600 stores could close, according to industry estimates. Many of them, the brand name anchor outlets that real estate developers once stumbled over themselves to court. Already there have been 5,300 retail closings in this year. Sears Holding, which owns Kmart, said in March that there's substantial doubt it can stay in business altogether and will close 300 stores this year. So far, this year, 9 national retail chains have filed for bankruptcy. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, एक सर्टन टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस साल बहुत सारे स्टोर्स को क्लोज किया गया था. हाउ अ लॉट ऑफ स्टोर्स हैव बीन क्लोज इन दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एस्टिमेट्स. जो एक टाइम पे जो ऐसे स्टोर्स थे कि जो रियल एस्टेट कंपनीज थी जो मॉल्स बनाती है, जिनके हेलो हेलो ओम तिवारी, वेलकम टू द सेशन. कैसे हो आप ओम? हम ये पैसेज कर रहे हैं, जल्दी से रीड कर लो आप भी. तो हम ये पैसेज डिस्कस ही कर रहे हैं, जल्दी से रीड कर लो. सो यहाँ पे बताया गया कि हाउ दिस ईयर हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेक्टिक, हाउ दिस ईयर हैज़ बीन वेरी बैड फॉर रिटेल स्टोर्स, एंड किस तरह से रिटेल स्टोर इंडस्ट्री जो एक टाइम पे बहुत ही बूमिंग थी वो अभी धीरे धीरे क्लोज हो रही है. इस साल बहुत सारे जो स्टोर्स हैं वो बंद हो रहे हैं. एंड उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है के मार्ट नाम की एक बड़ी सी कंपनी का, which is again saying this year that it will be difficult for them to sustain. एंड उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टोर्स को क्लोज कर दिया है. That's what this is talking about. Now, next passage. Local jobs are a major casualty of what analysts are calling, with only a hint of hyperbole, the retail apocalypse. Since 2002, department stores have lost 448,000 jobs, a 25% decline, while the number of store closures this year is on pace to surpass the worst depth of Great Recession. The growth of online retailers, meanwhile, has failed to offset those losses, with e-commerce sector adding just 78,000 jobs over the past 15 years. Some of those jobs can be found in the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from malls the company helped shutter. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस तरह से ये क्यों हो रहा है, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ इट. किस तरह से जो ये इंडस्ट्री है वो ऑन अ स्टीप डिक्लाइन है. किस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाए हैं, एंड किस तरह से बहुत सारी जॉब्स लूज कर ली हैं लोगों ने इन दिस टाइम ऑफ सच चेंजेस. बट एंड वहाँ पे उन्होंने अमेजोन के मॉल्स की भी बात की, अमेजोन के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात की. अमेजोन के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आ चुके हैं उन्हीं जगहों पे जहाँ पे एक ज़माने में मॉल्स हुआ करते थे. So both these paragraphs are majorly focusing on the decline of a certain industry of malls, or also we can call the retail industry.
But those are workplaces, not gathering places. The mall is both. And in 61 years, so those are workplaces मतलब आपके जो Amazon के centers हैं उनकी बात की जा रही है. The mall is both. And in the 61 years since the first enclosed one opened in suburban Minneapolis, the shopping mall has been where a huge swath of middle class America went for far more than shopping. It was the home of first jobs and blind dates, the place of family photos and ear piercings, where goths and grandmothers could somehow walk through the same door and find something they all liked. Sure, the food was lousy for you, and the oceans of parking lots encouraged car heavy development, something now scorned by contemporary planners. But for better or the worse, mall has been America's public square for the last 60 years. तो अब ये आ रहे हैं टू द इम्पोर्टेंस ऑफ योर malls in the past. What was the importance that malls had back in the day? What was the value that they held back in the day? How malls were were common places for uh, people to sort of come in, meet, and do a lot of other things apart from just shopping, right? So that is what they are describing in the first three sets of passages. पहले तीन सेट ऑफ पैसेज में इसकी बात की जा रही है. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड अप अंटिल नाउ. यहाँ तक सबके लिए सब कुछ क्लियर है. आई होप लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैरा. So what happens when it disappears? Think of your mall, or think of the one you went to escape. Think of perfume clouds in the department stores, the fountains splashing below the skylights, the cinnamon wafting from the food court. As far back as ancient Greece, societies have congregated around a central marketplace. In medieval Europe, they were outside cathedrals. For half of the 20th century and almost 20 years into the new one, much of America has found their agora on the terrazzo between Orange Julius and Sbarro, Walden Books, The Gap, Sunglass Hut, and Hot Topic. So now they're painting a picture of what the malls were like back in the day. What happens when it disappears, and what is the not just economical but like a sociological impact of places like this. What was the value that these places held in our society? The, that the mall was an ecosystem unto itself, a combination of community and commercialism, peddling everything you needed and everything you didn't. Magic Eye posters, wind catchers, Air Jordans. A growing number of Americans, however, don't see the need to go to Macy's at all. Our digital lives are frictionless and ruthlessly efficient. With retail and romance available at a click, malls were designed for leisure, abundance, ambling. You parked and planned to spend some time. Today, much of that time has been given over to busier lives and second jobs and apps that let you swipe right instead of haunt the food court. Malls, say Harvard business professor Leonard Schlesinger, were built for patterns of social interaction that increasingly don't exist. So that is what is explained to us in this passage about what has happened after the malls have been closed down. That is what this passage is talking about. If anybody has any doubts up until now, please do let me know so that I can explain the passage to you.
Hello, Abhinand Roy Arora. Welcome to the session. No doubts? Perfect. Chalo. The central idea of the passage is that now they want us to tell them what the central idea of that particular passage is. इस पैसेज का सेंट्रल या कोर आइडिया क्या है वो जानना चाह रहे हैं. Let's see how do we find the central idea of the passage. No? If you the closure of malls has affected the economic and social life of middle class America, the advantages of mall outweighs the disadvantages. Malls used to perform a social function that has been lost, and malls are closing down because people have found alternate ways to shop. अब ये जो चारों आइडियाज हैं, ये चारों के चारों आइडियाज यहाँ पे दिए गए हैं. All the four ideas have been given here in this particular passage. So how do we find which is the central idea of the passage? So if you take a look at this passage and the way in which the passage progresses, the focus of course begins from various things about how malls have lost their function, how it is affecting the economy. All of that is given to us. But the major idea, if you take a look at the last set of passages, in fact, from here, from right after the introduction, if you take a look at it, the passage is focusing on one idea and one idea alone. That is how malls used to have a function, used to have a relevance, and now that relevance doesn't exist anymore. So the option 1 is a part of the passage but not the whole passage. Whereas if you take option 3, that takes up for almost 70 to 80% of what the passage is in essence talking about. Which is why we go to option 3, which says that malls used to perform a social function that has now been lost. So option 3 या option C is the right selection in this scenario. शुभम, अभिनंद रॉय, क्या आप लोगों को समझ में आया why this one is the answer? Yes and no. If you haven't, please let me know so that I can explain it to you. I'm assuming so. Assuming it is clear to everyone, let us go to the next question. What does the next question talk about? Why does the author say in paragraph 2, the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the malls the company helped shut? Why is he saying this in that particular passage? Now, earlier somebody had said, sir, the issue is that every time I read a passage, I have to go back to the passage to understand what the passage is all about. That is right. You have to now. The advantage of reading the passage well is you know exactly which area to go back to. यहाँ पे option 2 तो दिया ही है passage में, paragraph 2 दिया ही है. So we can just quickly go back to paragraph 2. Now I want everyone to read this and let me know if you find the answer. I'll give you a minute or two to find your answer.
found the answer yet? क्या किसी को अभी तक आंसर मिला इसका? Do let me know. Let me now go back to the question. Massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the malls the company helped shut. What will be the answer here? क्यों ये सेंटेंस वहां पे दिया गया है? So if you take a look at this passage, the passage that they have asked us to find the answer in. Some of these jobs can be found in the massive distribution center Amazon has opened across the country, often not too far from the malls the company helped shutter. So when you take a look at the remaining areas, you get a context of what the passage is talking about. To highlight the irony of the situation, to indicate malls and distribution centers are located in the same area, to show that Amazon is helping certain brands go online, and to indicate that the shopping habits of Amazon middle class have changed. Definitely not 3 and 4. That's not what the passage talks about. Now, when they say this, are they saying it to indicate कि भाई दोनों सेम एरिया में है? No, the point there is that ये जितनी भी जॉब्स हैं, जितना भी चेंजेस आया, इट हैज़ कम बिकॉज ऑफ कंपनीज लाइक अमेजोन, एंड आज वो कंपनीज वहीं पे अपने सेंटर्स खोल रही हैं जहाँ पे एक ज़माने में कभी मॉल्स हुआ करते थे. सो इट इज़ जस्ट टू हाईलाइट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि भाई एक ज़माने में जहाँ पे मॉल्स हुआ करते थे, आज वही कंपनी जिसने वो मॉल्स बंद करवाए थे उनका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ है. सो दैट इज़ द आयरनी दैट इज़ बीइंग highlighted in this particular scenario. Next question. The author calls the mall an ecosystem unto itself because. If anybody has the answer, please drop in your answers. ऑप्शन 2. ऑल राइट, मनीष इज सेइंग कि ऑप्शन 2 है. चलिए लेट्स सी इफ ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. मनीष, आई विल गिव यू वन मोर चांस आफ्टर आई हैव डिस्कस्ड इट. टेल मी इफ यू स्टिल थिंक. आरसी सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छी नहीं होगी सुनीता, बट यस, न्यूज़पेपर रीडिंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द पार्ट्स of improving your RC.
That mall was an ecosystem unto itself, a combination of community and commercialism, peddling everything you needed and everything you didn't. So, not because people from all ages and all walks of life went there. It was a commercial space as well as a gathering space, Manish. Option 3 is the answer. Have you understood why option 3 is the answer? हैव यू अंडरस्टूड व्हाई ऑप्शन 3 इज द आंसर? मनीष समझ में आया? मैं आपको फिर से पैसेज में दिखा देता हूँ. देखिए, a combination of community and commercialism. So it was a commercial space as well as a gathering space. Option 3 इसीलिए है करेक्ट आंसर इस सिनेरियो में. सुनीता, मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि मैं अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस करता हूँ विच आर फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. क्योंकि आप आरसी की बुक लोगे आप कंप्लीट ही नहीं करोगे. आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू दैट. बाय आरसी बुक्स एंड देन नेवर गो थ्रू दिस. सो उससे बढ़िया ये होगा कि आप मेरी आरसी क्लासेस जो है अनअकैडमी जो कम्प्लीटली फ्री है आप अटेंड कर सकते हो. आपको क्लास नहीं अटेंड करनी तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से क्लास में क्लिक करके क्लास का जो पीडीएफ है ना आप डाउनलोड कर लो. वो डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस करने के बाद देन यू कैन गो टू द क्लास टू सॉर्ट ऑफ यूज इट एज योर आंसर की कि मेरा आंसर सही था नहीं था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था. ऑल ऑफ दोज डिटेल्स यू विल गेट देयर. तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप उन फ्री क्लासेस का एकदम ज़रूर फ़ायदा उठाएं. मनीषा, होप योर confusion or doubt regarding the earlier question is clear. Okay, I hope Manisha's doubt is cleared. Let us go to the next question. Why does the author say that mall has been America's public square? What will be the answer for this particular question? Why does the author say that the mall has been America's public square? So here, now when you see, let us take a look at where a growing number of Americans, sorry, I will tell you where to find the answer for this. But for better or worse, the mall has been America's public square for the last 60 years. So for this, you have to go through the whole passage that comes before it. But those are workplaces, not gathering places. The mall is both. And in the 61 years since the first enclosed one opened in suburban Minneapolis, the shopping mall has been where huge swaths of middle class America went for far more than shopping. It was the home of first jobs and blind dates, the place for family photos and ear piercings, where goths and grandmothers
could somehow walk through the same doors and find something they all like. Sure, the food was lousy for you and the ocean of parking. So यहाँ पे जो imagery यहाँ पे paint की गई है, malls did not bar anyone from entering the space, but that's not why they are calling it America's public square. Malls were a great place to shop for a huge section of middle class. But again, that's not the only point there. They're talking about it had something for everyone. It had a lot of things there. Malls were a hangout place where families grew closer to each other. Yes, families के बारे में बात किया है, but it is not just because families could grow close to each other. Because it was a place where everyone can, in one manner or the other, somehow interact, and everybody has something that will be useful for them. The author describes perfume clouds in the department stores in order to. अब यहाँ पे वो perfume cloud का जो example है वो क्यों दिया गया है, और why is the author using the terminology of the perfumed clouds? Please take a look at the passage and that should give you the answer. You can start by downloading the Unacademy app, और हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस है वो आप अटेंड करना चालू कर सकते हैं in order to at least start off your preparation. So when you see they use this word, where do they use this particular word? They are using it. Think of your mall, or think of the one you went to escape. Think of the perfume clouds in the department stores, the fountain splashing below the skylights. तो यहाँ पे वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि अपने मॉल के बारे में सोचो, उस मॉल में जहाँ आप जाया करते हो. सो दे आर यूजिंग दैट इन ऑर्डर टू इवोक मेमोरीज बाय पेंटिंग. एक मॉल का एक आपके माइंड में एक पिक्चर पेंट करके आपको उसकी मेमोरी याद दिलाने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिनेरियो. So this is how you guys have to attempt the passage. This is the process of going back and forth between the passage to ensure you have a lot of accuracy. Yes, sure. अर्नव जल्दी से पूछ लीजिए बिफोर आई रैप अप द सेशन. तो काफ़ी सारे नए बैच, काफ़ी सारे टेस्ट आ रहे गाइस अनअकैडमी पे.
बहुत सारे नए बैचेस आ रहे हैं, 6 मंथ के कोर्स DULLB के, क्लैट का 1 ईयर का कोर्स, क्लैट 2022 का 3 मंथ का कोर्स, क्लैट 23 का कोर्स, लॉट ऑफ कोर्स कमिंग अप. ऑल यू हैव टू डू इज गेट योर सब्सक्रिप्शन एंड आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पे बाय डाउनलोडिंग द ऐप. आपको क्या करना है, नीचे गए दिए लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. दैट इज ऑल यू हैव टू डू. सो गेट योर सब्सक्रिप्शन एट द अर्लीस्ट. सो अर्नव, एक काम करो आप, जैसा मैंने सुष्मिता को भी बोला था कि आप, सुनीता को बोला था कि आप जो है मेरी, यू आर गोइंग टू परचेज अर्नव, आर यू प्लानिंग टू परचेज सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी? अच्छा, बुक यू. तो एक काम करो, मेरे फ्री क्लासेस जो है अर्नव अन अकेडमी पे वो अटेंड कर लो. वहाँ पे मैं बहुत सारे पैसेजेस करवाता हूँ. तो अगर आपको क्लास भी अटेंड नहीं करनी है तो आपको सिर्फ उसमें से PDF डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन चालू करना है. तो वहाँ पे मैं बहुत सारे पैसेज, हार्ड, इजी या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेज मैं लाता हूँ. तो ऑल यू हैव टू डू इज डू दैट. लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पे क्लिक कर लो एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन एट द अर्लीस्ट. ठीक है. ऑन दिस नोट गाइस, आई एम गोइंग टू रैप अप टुडेज सेशन. बाय बाय एंड टेक केयर. आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में. बाय गाइस, सी यू एंड टेक केयर.